Chandrayaan 3 is going to be attempting to land on the south pole of the moon, and we will be talking about this amazing feat that India is on the anvil of achieving. We have a special guest at this point in time with us on the show. Mr. Jairam Thakur, former Chief Minister of Himachal Pradesh, joins us on the program. Jairam Thakur जी, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहला सवाल, आज भारत के लिए बहुत शान का दिन है, बहुत आन बान का दिन है. किस तरीके से आप देखते हैं इस वैज्ञानिक उपलब्धि को? स्वाभाविक रूप से हमारा देश बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ जिस तरह से एक मजबूत नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और आज हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि पृथ्वी पर तो हमारा नेतृत्व बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, और अब चंद्रमा की तरफ भी हम आगे बढ़ करके सफलता हासिल करने जा रहे हैं. और मैं इस अवसर पर खासतौर से देश के जो साइंटिस्ट हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आज का ये अभियान हमारा सफल होगा. और जो पिछली बार जो एक पूर्ण सफलता से थोड़ी कमी रह गई थी, तो उस बार इस बार जो है वो पूर्ण सफलता को हम हासिल करेंगे. और स्वाभाविक रूप से साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है, परिश्रम किया है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 9 वर्ष के कार्यकाल में अपने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया है. और स्पेस एक ऐसा लक्ष्य था जिस लक्ष्य में भारत अपनी पहचान बनाने में अभी सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा था. मुझे लगता है कि आज की इस अभियान के पूर्ण होने के बाद हम उस लक्ष्य को भी हासिल करने जा रहे हैं. सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इसरो ने और देश ने स्पेस के माध्यम को लेकर इतनी उन्नति की है, ये हमारी सरकार के बारे में, सरकार की विचारधारा के बारे में, पॉलिटिकल विल के बारे में क्या बयां करता है? ठीक है, पॉलिटिकल विल तो बहुत ज़्यादा इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल ये करती है. पिछली बार आपने देखा होगा जब वो अभियान हमारा सफलता के करीब पहुंचने के बावजूद पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, तो उस सूरत में साइंटिस्ट बहुत इमोशनल भी थे और भावुक भी थे. और भावुक होकर के हमने उस दृश्य को अच्छी तरह से, आज भी हमको याद है वो 4 वर्ष पहले का वो दृश्य जब साइंटिस्ट जो है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले मिले, और लग रहा था उनको कि हमसे बहुत मतलब कभी छूट गई. लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें उसी वक्त हौसला दिया, हिम्मत दी, और कहा कि कतई भी इसमें रोने की बात नहीं है. आपने ईमानदार प्रयास किया है, सफलतापूर्वक प्रयास किया है, और इसमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है. अगर कमी रही है, इस कमी को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे. और उसी दिन से ही जुट गए इस अभियान में, और मुझे आज पूरा भरोसा है. मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग आज 6 बजे के करीब जो है वो होने वाली है, उसमें हम सफलता हासिल करेंगे. सर, प्राइवेट सेक्टर में भी एक जोश नज़र आ रहा है इन सारी उपलब्धियों को देखते हुए. आपको क्या लगता है कि भारत का लोहा अब अमेरिका और चीन को भी मानना पड़ेगा, या आपको लगता है कि हमारा मुकाबला सिर्फ खुद से है, किसी और से नहीं? नहीं, देखिए, एक तो बात ठीक है कि स्वाभाविक रूप से जो अपने आप को बहुत आगे मानते थे, चाहे रशिया है, चीन है, चाहे वो अमेरिका है, अभी तक चंद्रयान चांद पर जाने में सफलता इन्हीं देशों ने हासिल की है. और ऐसे में उनके लिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाह रहे, लेकिन हम अपने आप मानते हैं कि अपना कंपटीशन अपने आप से है, और हमको उसमें आगे बेहतर करना है. इसमें कंपटीशन के लिए किसी के साथ हम अपने आप को जोड़ें, वो उचित नहीं है. मुझे लगता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ेगा ही, और भारत ही आगे होगा, और ऐसे में ये कदम उस दिशा में है. सर, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की जो मुहिम शुरू की थी प्रधानमंत्री ने और आपकी सरकार ने, आपको लगता है कि उस प्रणाली में ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है? यही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक दुनिया की दौड़ में विकास करते हुए हम भारत एक अलग पहचान के साथ एक अलग सम्मानजनक स्थान पर पहुंचे हैं,
हर क्षेत्र में पहुंचे हैं। उसमें एक क्षेत्र ये था जिसमें अभी पहुंचना बाकी था, जिसमें पहुंचने के लिए अभी ये शुरुआत है, और ये शुरुआत मैं समझता हूं कि ये दुनिया के मानचित्र पर भारत का सम्मान भी और ऊंचा करेगी, और स्वाभाविक रूप से भारत यशस्वी होगा। और ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बधाई देने के साथ साथ में साइंटिस्ट को, जिन साइंटिस्ट ने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, रात दिन इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन उनके लिए शुभ हो, हम सफलता हासिल करें, बस यही कहना है। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir. Mr. K. Siddhartha, former ISRO scientist, with us on the program. Dr. Surinder Pal, former ISRO scientist as well, joining us on the show. Commander Ashok Bijilwan is also with us on the program, and Ashu Ghai, CEO and founder of Science and Fun, also joins us on the program. Mr. Siddhartha, I'll come to you first. I hope you can hear me, sir. Well, 20 minutes of terror is what ISRO has described the last minutes of this landing. Considering that we still are carrying a few ghosts from 2019, what areas do you feel are required to be monitored very, very closely when this landing takes place today, as a scientist, as somebody who understands the technicality of this massive operation? Will you say all the stages, all the 5 stages that we are talking about, whether it is going to be a deceleration stage? Now imagine in just 11 seconds we are bringing the speed of Chandrayaan to 358 meters per second. That is going to be still stupendous. Then tilting off the Chandrayaan, that is going to be stupendous. Then bringing it again to a soft stage, that is going to be stupendous. Now, again bringing it to the horizontal stage is going to be equally significant in this case, and allowing it to stand still in that region, that is in the third stage, calibrating all the cameras in the second stage, and allowing it to stand still in the fourth stage, where it starts taking a look at the ground, and then hazard detection cameras as well in this case. Now, that is still going to be stupendous, and then allowing it to land. Now, what we have done this time is that when we are going to be landing, we are not taking the help of the camera, rather we are taking the help of radio frequencies, because the dust particles that may be emitted, and we do not know how much amount of dust particle that will be emitted. So all of these dust particles that are going to be emitted, that may not go to block the lens of the camera. So radio frequency is going to be used, and that itself is going to be significant. So there is no way you can go on to say that in these 15 to 18 minutes of terror, which we can go on to call it as excitement, which will go on to call it as a rediscovery, which will go on to call it as a challenge, whatever that you can go on to call it, there is any stage that you can think that you can go on to discount it. Now, even after it has landed, and once a rover starts moving out of it, even that is also not one of the states that is going to be discounted, because you have to have a connection with the lander, with the ground station. Of course, it is going to be with the orbiter and so on. So how exactly it goes on to get connected, and to what extent it starts signaling, giving signals, and then unless the rover comes out, every stage is going to be critical in this case. Okay, Dr. Surinder Pal. Yes, please. Sir, in your gumption, the criticality and the stages these criticalities will go through today, what is most important? Yeah, I mean, I agree with Dr. Siddhartha. First, about every stage is critical. In space technology, we don't take anything lightly, first thing. And I won't like to call the terror or something like that, It's not that way. They are crucial and critical thing. And a lot of simulations have been done, both experimental as well as theoretical. A lot of similar, and even we have put on crane, craters have been simulated. So all the things which are conceivable things which have been done on Earth. Then added to that one, there are a lot of redundancies are built in.
all the guidance systems which were there on the second order or first order, they have been made second order. What were there in second order have been made the third order, and added to that one, like a laser velocity Doppler meter, then carband altimeter, which Dr. Siddhartha talked about it. In case there is a sand comes up, then we have got laser altimeter. The most important is when the total rover, lander hovers, it's a hazard detection avoidance camera, which will play a very important role. It has given the photographs. Now, pictures are there on the net. ISRO has released it, and ISRO has selected some out of 20 sites. They have selected 8 sites. If it does not land on one side, it will go to another site 100 meters. And ISRO has also told that if somehow, because of some parameters of Chandrayaan or something else, if it doesn't, they are not successful landing on today, it will go on 27, which will be on westwards. Again, we'll get a 14 days. So much of redundancy is built in, software-wise, hardware-wise, and also there is a lot of propellant inside it. So even, to my understanding, it can go into the orbit again and come back. So that sort of thing is there. And with all these things and taking precautions, as a technologist, I feel that we are confident. Of course, I'm anxious as a technologist, but we are confident also. See, there's two things. Any technologist will be anxious whenever things are going on, And at the same time, he'll be confident my efforts and whatsoever hard work I have put up will bear the fruits. So I'm quite confident. What Dr. Siddhartha told, they are all critical moments, but they've been simulated, and they've got redundancies. Even most important thing is thrusters. Last time thrusters we could not regulate. The slew rates we could not adjust. Now slew rates can be adjusted after when it comes to horizontal velocity scale. When it comes to vertical velocity, only 2 thrusters will work. And as per the chairman ISRO's thing, as long as propulsion works, rest of the things we will land safely. And even not, if not 23rd, 27th. Otherwise also, I feel that the amount of propellant and other things are there. We can come back again on the same orbit, and even maybe later on also. Those things ISRO has to mission operations persons have to analyze it. I feel we will be successful, 100% successful. Of course, we have got anxious moments. Those 15 minutes are anxious moments, and the total it's almost 1,000 seconds it will take from coming out from perigee of 25 kilometers to almost touching down. Absolutely. The last thing which I wish to add it that that our legs, which can take up to 3 meters per second, that sort of impact. It's like somebody throwing out from say 15 or 20-story building down. So that sort of impact it can hold, and velocity even if velocity which is desired is 1.8 meters per second to 3 meters, it will hold. Even slopes it can hold, and it will avoid the shadows, it will avoid the boulders, although it's difficult in that terrain. But I'm quite sure the 8 sites which they have chosen. Right, sir. Let me also rope in Mr. Suresh Nayak into this conversation. Mr. Nayak? Mr. Nayak, if you're there with us? Ashu Ghai, if you're there with us? Yes, sir. Namaskar, sir. Namaskar. ISRO will also be hoping that you have 14 Earth days to conclude this exercise, and you're also going to be hoping that the equipment does not malfunction. It survives for that longevity of 14 days. Hello? Go on, please reply. Mr. Ghai, can you hear me? Okay, perhaps Hello? not. Perhaps not. Commander Ashok? Commander Ashok? Hello, yeah. Commander Ashok, your thoughts on the Yes. vulnerabilities of this mission? Yeah, okay. Any airborne object, when you have to bring it down to ground, the pilot or the one who's controlling it is obviously anxious because it's not easy. And any pilot who has attempted a forced landing on anywhere other than an airstrip will agree with me.
So, and doing it on a terrain which is absolutely unknown, unmapped, and uncharted. So that's obviously difficult. And second, as earlier mentioned, there is a lot of dust, the lunar dust that will be blown, because as the lander will approach, and the thrusters will be employed to arrest the rate of descent. And keeping in mind all that, like you said, that they'll be using radio frequency to see, or not see, but to judge how to, the distance between the ground and the lander. So that's a very, very tricky, what should I say, a very tricky operation to execute. But I'm sure our scientists have worked out all the possible permutations and combinations that are expected to be encountered during the operation, and the blessings and prayers of 1.4 billion Indians are there with them, and we are all standing united, awaiting the Vikram lander to successfully land on the moon, and help India progress on the path to the space exploration program. Okay, all right. Let me go back to Mrs. Siddhartha. Mrs. Siddhartha, if you're there with us. Okay, Mrs. Siddhartha not there with us. Ashu Ghai, I'll try and speaking with you again. Ashu, if you're there with us, can you hear me? Ashu Ghai? Yes, sir. Right, Ashu Ghai, your response to the technical expectations that ISRO has of its equipment on the moon. सर अभी तक मैं एक्चुअली बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मेरे बच्चों का मुझसे एक बहुत ही क्यूट सा सवाल था कि बहुत सारे बार हम लोग मतलब ट्राई कर चुके हैं, हम लोग मार्स पे जा चुके हैं, कई कंट्रीज 5 मार्स प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें से लगभग 2 लोगों ने सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड किया। तो मून पे जाना अब इतना मुश्किल क्यों है? जब हम लोग मार्स पे जा चुके हैं तो मून पे जाना इतना मुश्किल क्यों है? तो मैंने उनको बहुत बेसिक साइंटिफिक रीज़न दिया कि यार देखो, बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे एक ये है कि मार्स पे हमारे पास एटमॉस्फेयर है, और जब हम लोग लैंड कर रहे होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम लोग पैराशूट ओपन कर सकते हैं, जो कि हमें एक्शन रिएक्शन फोर्स देके बहुत इजीली लैंड करवा सकता है। लेकिन मून पे हमारे पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से लैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सेकेंडली, वहाँ पे जब हम लैंड करके अपने थ्रशर्स ऑन करते हैं तो इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, जो कि सेंसर के अंदर और सर ने ये बताया कैमरा के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि लैंडिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इस बार चीज़ें क्यों और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी? देख सर, पहली बात तो हम लोगों ने मैं इसरो का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो चंद्रयान 2 था वो लगभग 850 करोड़ का हमारा वहाँ का बजट था, बट इस बार हम लोगों ने वही सेम काम 650 करोड़ में करके दिखाया है, या उससे भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग कैसे और एफिशिएंट होते जा रहे हैं उस काम के अंदर। हम अब मुझे किसी ने बोला कि किसी बाहर की कंट्री ने कुछ आर्टिकल छापा, और उस आर्टिकल का जवाब हमारे यहाँ के लोगों ने ये दिया कि 650 करोड़ में वो लोग उससे ज़्यादा में वहाँ पे मूवीज़ बनाते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे चंद्रयान जो है वो बना दिया। तो जो मेन डिफिकल्टीज यहाँ पे होने वाली हैं वो एक तो एटमॉस्फेयर है, और सेकेंडली मून से अर्थ का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम भी है, ऑब्वियसली बात है, एज कम्पेयर टू मार्स। तो मून तक जाना बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू मार्स, तो गलती जब होती है तो उसको रेक्टिफाई करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड सेकेंडली, हम मून के उस वाले हिस्से में इस बार जाने वाले हैं जो कि साउथ पोल है, जहाँ पे शायद कुछ लोग ना जानते हों कि वो हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जब से मून बना है तब से आज तक कोई सनलाइट भी नहीं गई है, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत होने वाले हैं, थर्मल शॉक को फील करना होगा हमारे ऑर्बिटर तो खैर पहले से घूम रहा है, थर्मल शॉक को वहाँ पे फील करना होगा हमारे लैंडर को, हमारे रोवर को। वहाँ पे कुछ हिस्सों में सनलाइट नहीं होगी, तो इसरो का ये प्लान बहुत ज़बरदस्त जी, था। बिल्कुल ठीक कहा आपने आशु। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.